Next we are doing type third, which is related to inverse Fourier transform. Then first example, find fx if its Fourier sine transform is s upon 1 plus s square. Now here we are given fs bar s. Fourier sine transform are here given s upon 1 plus s square. We have to find out fx. So we know that by the definition of Fourier sine inverse transform, fx can be written as 2 upon pi integral 0 to infinity fs bar s sine sx into dx. Now substituting the value of fs bar s upon 1 plus s square sine sx into x, which is equation number 1. Now making same as we having 1 plus s square in the lower form 1 plus s square, then multiply that equation to s, then we get s square upon 1 plus s square. Now 1 add and 1 subtract, then we get sine sx into dx. Now 2 upon pi integral, separate both the terms, integral 0 to infinity s square plus 1 upon s square plus 1, then we get sine sx. मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा. Then we get 1 upon s sine sx into dx minus 2 upon pi integral 0 to infinity minus of 1 upon s into 1 plus s square sine sx into dx. Now using the result, integral 0 to infinity sine x upon s, by the result integral 0 to infinity sine sx upon x into dx can be written as pi by 2. Here in the place of x we have s. In the place of x we have s, or sorry, here we having ds. This is ds. Okay, ds. Then this is pi by 2 minus 2 upon pi integral 0 to infinity sine sx upon s into 1 plus s square into ds, which is equation number 2. This is fx. Now differentiating with respect to x, then we get df by dx is, from here we get 1, this is 0, minus 2 upon pi integral 0 to infinity sin sx होगा cos sx, and from sx we get s 1 plus s square into ds, which can be written as minus 2 upon pi integral 0 to infinity s to s cancel out, cos x upon 1 plus s square into ds, which is equation number 3. Now again differentiating with respect to x, then we get d square f by d square and minus 2 upon pi इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कोस एक्स को हम लिख सकते हैं s साइन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू डी एस, एंड
x is equal to f from here 2 upon pi remove the s, then s upon 1 plus s square sin s x dx. This is f d square f by dx square माइनस f इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देन वी गेट 2 रूट डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 4. अब रूट्स आए हमारे प्लस माइनस 1, तो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स, विच इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एफ बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा ए ई रेज टू पावर एक्स माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स, विच इज इक्वेशन नंबर 6. नाउ सब्सटीट्यूटिंग एफ x is equal to 0 at second, from second at x is equal to 0. This implies from second we get f at 0 here, f at 0 यहाँ 1 हो जाएगा हमारे पास, एंड साइन 0 0, देन वी गेट 1. ओके, नाउ f यहाँ पे रखेंगे हम 5th में x को 0, देन f at 0 इज़ a प्लस b, x is equal to 0 from 5th we get this. Okay, now comparing to both equation we get a plus b is equal to 1. now डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं. फ्रॉम 6 x is equal to 0, from 6 we get x df by dx at x is equal to 0, then a minus b. now from again डेरिवेटिव में रखेंगे डी एफ बाई डी एक्स इज़ माइनस 2 अपॉन पाई, यहाँ रखेंगे x को 0, तो कोस 0 इज़ यहाँ कोस 0 इज़ 1. देन फ्रॉम थर्ड वी गेट डी एफ बाई डी एक्स एट x 0 इज़ माइनस 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कोस 0 इज़ 1 upon 1 plus s square ds, that is minus 2 upon pi tangent inverse s. Taking limit 0 to infinity, then we get minus 2 upon pi and tangent inverse infinity, that is pi by 2, and tangent inverse 0 is 0, which is minus 1. And from here a minus b is minus 1 and a plus b is 1. then we get a is 0 and b is 1. then f of x is equal to, from 5th f of x is equal to a 0 then b 1 e raised to power minus x. That is the final result.